Welcome to my study channel. Friends, if you are preparing for JKSSB jobs or central government job, then this topic is most important for you. Our today's topic is previous year's repeated words with their meaning and antonyms. So friends, without wasting time, let's start. Our first word is admonish. Antonym is praise and meaning is reprimand firmly. Friends, you have no need to learn these words or antonyms, but you have a great need to revise these words 2 or 3 times so that when you will see the option in your exam, you will tick the right option there. So, next word is dislike. Dislike antonym is predilection. Dislike antonym is predilection and meaning is a preference or special liking for something. Next word is protein. Here antonym is unshanking. Protein antonym is unshanking. Protein का मीनिंग है tending or able to change frequently or easily. ठीक है, कोई आदमी अपने आप को जो है easily चेंज कर लेता है बड़ी जल्दी से, तो that is protein. And unshanking means जो बंदा अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकता. So protein का जो एंटीनम क्या है? unshanking. Next word is to in toto. Antonym is partially and meaning is as a whole. Despair antonym is hope, the complete loss or absence of hope. Despair का मीनिंग है the complete loss or absence of hope and its antonym is hope. Next word is arid. Antonym is wet. Arid का मीनिंग है having little or no rain. Too dry, सूखा जिसे बोलते हैं. And its antonym is wet. Next word is curtail. And antonym is enlarge. Curtail का मीनिंग है reduce in extent or quantity. और उसके बाद में एक चीज और है कि impose a restriction on. curtail का क्या होता है? enlarge. Next word is convicted. Antonym is acquitted. Acquitted means acquitted. ये convicted क्या होता है? दोषी. acquitted होता है जो मुक्त, किसी भी जो केस है उससे मुक्त, जिसके ऊपर कोई भी दोष ना हो. So meaning of convicted is declared to be guilty of a criminal offence by the verdict of a jury or the decision of a judge in a court of law. So convicted का क्या है? antonym acquitted. Next word is futile and antonym is worthy. Meaning of futile is incapable of producing any useful result or pointless. Next word is migrate and antonym is return. Friends, the meaning of migrate is move from one region to another according to the seasons or conditions. Next word is abundance. Antonym is scarcity. Abundance meaning is a very large quantity of something. Next word is arrogant. Antonym is modest. Meaning of arrogant is having or revealing an exaggerated sense of one's own importance or abilities. You have no need to learn the meaning of these words, but you have a great need to learn the antonyms of these words. So arrogant, antonym modest. फ्रेंड्स, अगर वहां पे मोडेस्ट आ जाता है तो आपने उसका एंटीनम क्या लिखना है? एरोगेंट. नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेशियस. ऑडेशियस का एंटीनम क्या है? कॉवर्डली. showing a willingness to take surprisingly bold risks.
ऑडेशियस कोवार्डली, जैसे बोलते हैं ऑडेशियस कोवार्डली तो होता है कि जैसे बुज़दिली से, ठीक है। ऑडेशियस क्या हो गया, बहादुरी से। शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क्स, जो आदमी रिस्क जो है साहस के साथ जो है रिस्क लेना जानता हो। नेक्स्ट वर्ड इज एलियन, एंटीनम इज नेटिव, बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट वर्ड इज अपेरेंट, अपेरेंट का मीनिंग होता है क्लियरली विजिबल, जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो। सो एंटीनम इज हिडन। नेक्स्ट वर्ड इज मायोपिक एंड एंटीनम इज फेयर साइटेड। मायोपिक का जो है जो मीनिंग होता है शॉर्ट साइटेड। सो द एंटीनम ऑफ मायोपिक इज फेयर साइटेड। ऑब्स्टिनेट मीनिंग stubbornly refusing to change one's opinion or chosen course of action despite attempts to persuade one to do so. Obstinate का जो एंटीनम होता है that is confused. Obstinate, confused. Next word is mournful. Antonym is joyous. Mournful, antonym joyous. And meaning of mournful is feeling grief or sadness. Thanks for watching this video friends. Prepare well, perform well. अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास समय के अनुसार पहुँचे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय बाय।